हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 7 का पार्ट सेकंड। ओके, विजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ का। सो वेलकम टू माय चैनल, रत्नत्राया में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा 50 क्वेश्चन हो चुका था पार्ट 1 में, एंड अभी 51 से स्टार्ट होगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहिए पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड एंजॉय द सेशन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस स्पेशल ड्राइंग राइट। ओके, स्पेशल ड्राइंग राइट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया। ओके, so first statement is SDR, which is a special drawing right, is a currency or claim on the International Monetary Fund. Is it true? No, it's not correct because it's nahi ye SDR is neither currency nor claim on the IMF. Okay, so first statement is incorrect. Next one is an currency to be included in the SDR basket has to meet the export criteria and the freely usable criteria. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is SDR can be held by a private individual and entities. Is it true? No, it's not correct because SDR cannot held by the private individual and entities. Okay, so answer for this question is option number B. Only two statement is correct. Okay, next question is consider the following statements with reference to measure the measure of money supply in India, and there is asking what the correct statement. Okay, so first statement is among all the measures of the money supply, which is A1 is most liquid. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is M4 is the most commonly used measure of money supply and is known as aggregate money resources. Is it true? No, it's not correct because it's not M4, it's M3. M3 is most commonly used measure of money supply and is known as aggregate monetary resources, not M4. Okay, so answer for this question is option number A. Only one statement is correct. And if we're talking about some important things related to the money supply, so money supply is basically the total stock of money in circulation among the public at a particular point of time, which is known as money supply. Okay, and money supply there is 4 alternatives measures of the money supply. Okay, इसके कितने 4 मेजर्स हैं और वो कौन कौन से M1, M2, M3 एंड M4, ये चारों हैं। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं ये चारों मेजर्स की मनी सप्लाई के, सो अगर हम M1 की बात करते हैं, M1 is equal to CU. M1 is equal to CU plus DD. What is the meaning of CU? CU is a currency and जिसमें notes और coins दोनों included होते हैं, और DD which means net demand deposit held by the commercial bank. DD which means net demand deposit held by the commercial bank. and M2 की अगर हम बात करते हैं, M2 is equal to M1 plus savings deposits with post office saving banks, and M3 is equal to M1 plus net time deposits of commercial banks, and M4 is equal to M3 plus total deposits with पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक्सक्लूड रहता है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एंड यस, सो M4 इज इक्वल टू ये। और अगर हम M1 M2 की बात करते हैं, M1 M2 आर नैरो मनी एंड M3 एंड M4 आर ब्रॉड मनी। ओके, ब्रॉड मनी। एंड अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो मोस्ट जो लिक्विड होता है वो कौन सा होता है? सो M1 इज
मोस्ट लिक्विड, ओके, एंड अगर लीस्ट लिक्विड की बात करते हैं तो वो M4 हो जाएगा, लीस्ट लिक्विड M4, ओके. So yes, this is some important facts related to monetary supply money supply and M1 and M2. Okay, let's come to the next question. Answer क्या था इसका? Option number A, only one statement is correct. Next question is, how many of the following currencies form a part of special drawing rights basket of currency? Special drawing rights basket of currency में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वो पूछा गया. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज US डॉलर करेक्ट, जापानीज येन करेक्ट, चाइनीज़ पहले नहीं था बट 2016 में ये भी ज्वाइन किया है, सो ऐड क्या कर दिया गया है. रेनमिनबी करेक्ट, इंडियाज़ रुपी नो, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग, ये सब इसके यूएस का करेंसी क्या है? डॉलर. एंड अगर हम बात करते हैं जापान का करेंसी क्या है? येन, चाइना का है रेनमिनबी, इंडिया का है रुपी, यूरो है यूरोपियन यूनियन का, एंड ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश का है पाउंड स्टर्लिंग. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 5 स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड एक जो है इंडियन रुपी ये इनकरेक्ट है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, let's come to the next question, which is consider the following actions of the RBI. How many of the above are likely action of the RBI during Hawkins contradictionary monetary policy? Okay, so first one is increasing interest rate, correct. Increasing reserve requirements, correct. Selling government bonds, it's also correct. अगर हम RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं वो दो तरह का होता है, एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है और दूसरा होता है एक एक्सपेंशनरी. ओके, एक्सपेंशनरी, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है एक्सपेंशनरी. फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्राडिक्शनरी है तो इंक्रीज़ किया गया इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स. अगर एक्सपेंशनरी करना रहता है तो इसी को क्या किया जाता है? डिक्रीज़ किया जाता है. सॉरी, इंक्रीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है तो उसको क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा. एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है तो इसको भी डिक्रीज़ करेगा. एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड है इन कॉन्ट्राडिक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो इसको क्या करेगा? वो सेलिंग को बाइंग कर देगा. ओके, बाय करेगा, बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ये उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, all 3 statements are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with respect to balance of current account. Okay, balance of current account के according यहाँ पे पूछा है not correct statement. Okay, so first one is consider the following statement with respect to balance of current account. First one is it is a measure of all payment made of currently produced goods and does not include services. Is it true? No, it's not correct because ये इसको भी इंक्लूड करता है, सर्विस को भी इंक्लूड करता है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट वन इज इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्सक्लूडिंग द इंटरनेशनल ट्रांसफर पेमेंट. इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इसको भी एक्सक्लूड नहीं करता है, इंक्लूड करता है. ओके, include. So second statement is also incorrect and there is asking about the incorrect statement, not correct statement. So answer for this question is option number C, both statement are incorrect. Okay, next question is consider the following statements and there is asking about the assertion reasoning wala. Statement 1 is the RBI governor is not the sole authority in inflation targeting. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is next statement is the monetary policy committee has replaced the RBI governor in this role. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A. Both statement 1 and 2 are correct, but both statement 1 and 2 are correct and statement second is correct explanation of statement 1. Okay, so option A is the correct answer for this question. and अगर हम monetary policy committee की बात करते हैं
So is a committee of the Central Bank of India, which is कौन सा है वो RBI, headed by its governor, which is entrusted with the task of fixing the benchmark policy interest rate, which is repo rate, in repo rate to contain inflation within this specific target level. Okay, so answer is option number A. Let's come to the next question, which is which of the following statement is correct about the balance of payment? BOP के regarding कौन सा statement correct हो? So first statement is it is a record of only goods and services exchange between the resident country of the rest of world. No, it's not correct. It includes transaction consisting of import, export of goods, services, and capital, but exclude foreign aids and remittance. Is it true? It's also incorrect. Next statement is it is a systematic record of all economic transaction between the residents of one country and rest of the world. Yes, option number C is the correct answer related to the BOP, balance of payment. Okay, next question is how many of the following indices are published by the World Bank? इसमें से कौन से इंडिसेस पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? ओके, सो और यहाँ पे क्या पूछा? करेक्ट वन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज World Development Bank, World Development Report is published by the World Bank, correct. Global Economic Prospect Report also published by the World Bank, and Global Financial Stability Report published by the IMF. Okay, IMF, International Monetary Policy Fund. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर reflected on the assets side of the balance sheet scheduled commercial bank in India. So first one is, यहाँ पे क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है? फर्स्ट वन इज लोन एडवांसेस. जी हाँ, ये एसेट साइड में होगा. नेट टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय अ बैंक, इज इट? नो, इट्स अ लिक्विडिटी साइड. ओके, liquidity side. So second statement is incorrect. Next, cash reserve ratio. Yes, option number statement 3 is also correct. So answer for this question is option number C, which is 1 and 3 statement is correct. Let's come to the next question. और अगर हम इसमें लिक्विडिटी की बात करते हैं, लिक्विडिटी इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय बैंक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग, and there is asking about the currency held by commercial banks. How many of the above components of high powered money? Okay, so first one is currency held by public. Is it true? Correct. Foreign exchange reserve held by the RBI. No. Currency held by the commercial bank. Yes. So answer for this question is option number B, only two statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to outright open market, and यहाँ पे correct statement पूछा है. So first statement is related to outright open market operation. First one is outright open market operation are conducted with a promise to buy or sell the securities at the large stage. Is it true? No, it's not correct, because कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है outright open market operation में कि जब कोई बॉन्ड को सेल किया जाएगा तो बाद में उसको खरीदना ही पड़ेगा. ओके, और कहीं पे ये भी नहीं बोला गया है कि जब कोई फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी खरीद रहा है, ओके, कोई सिक्योरिटी खरीद रहा है तो उसको बाद में फिर बेचना ही पड़ेगा. ओके, ये कहीं पे मेंशन नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज outright open market operations are conducted for the managing long term liquidity mismatch. Is it true? Yes, it's a correct statement.
So answer for this question is the option number B. Only two statement is correct. Okay. Next question is what does depreciation primarily represent in the context of capital goods? Okay. कैपिटल गुड्स के अकॉर्डिंग कौन सा डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सो फर्स्ट इज एन आउटराइट monetary loss, no. Decline in the capital's value over time, yes. Option number B is the correct answer for this question. Next question is consider the following statements with reference to consumer durables and इसमें correct one पूछा है. Okay. So first one is television, refrigerator, home computers are called consumer durable. Yes, it's a correct statement. Consumer इसको use करता है. And next one is all consumer durables are called capital goods. Is it true? No, it's not correct because capital good which means जिससे हम फॉर एग्जांपल फ़ोन है हमारे पास, उससे हम कुछ वीडियो बना के, लेक्चर बना के, या फिर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उससे हम कुछ भी काम करके अर्निंग कर सकते हैं, तो उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे. बट अगर उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है कुछ, और जो हम बस यूज़ कर रहे हैं दैट्स इट, तो वो कैपिटल नहीं होगा. ओके. सो इसमें ऑल नहीं आएगा इसके अंदर. ओके. सो ओनली दोज consumer durable which are used in the production of other goods are called capital goods, not all one. Okay. So statement answer for this question is option number A. Only one statement is correct and statement second is incorrect. Next question is consider the following pairs regarding the factor of production and their corresponding earning. Okay. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? ओके. सो फर्स्ट वन इज लैंड से रेंट अर्न होता है, करेक्ट. लेबर को वेजेस मिलता है, वो भी अर्न हुआ, करेक्ट. एंड कैपिटल से प्रॉफिट होता है, नो. कैपिटल से क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलता है. ओके. सो कैपिटल इंटरेस्ट अर्न होता है. एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है. ओके. प्रॉफिट अर्न करता है. सो ये दोनों गलत हो जाएगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच, क्योंकि यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा था. ओके. एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, टोटल 4 है जो कि यहाँ पे दिया गया है, विच इज़ लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि दे आर हेडेड फॉर अ क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Let's come to the next question, which is net national product is obtained from gross national product by कैसे? Okay. So first one is net national product is obtained किया जाता है gross national product से. How? By adjusting for inflation. Is it true? No. Adjusting for depreciation. Yes. Option number B is the correct answer for this question. And if we're talking about the net national product is equal to GNP minus depreciation. Okay, this is the formula. And NP is equal to GNP minus D, which is depreciation. Let's come to the next question, which is consider the following statements. So first one is if the GDP of the country is rising, the welfare may not rise as a consequences. Yes, it's a correct statement. Next one is the GDP does not account for positive and negative externalities. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A. Both statement is correct and statement second explain the statement 1. Okay. So next question is while calculating the GDP, which is gross domestic product, by expenditure method के द्वारा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जब GST, which is gross domestic product को
कैलकुलेट किया जाता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इसमें से कौन सा अकाउंट में नहीं यूज़ किया जाता है ओके कैलकुलेशन के टाइम. सो फर्स्ट वन इज फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्लूड किया जाता है इसको. फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको भी इंक्लूड किया जाता है. एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, देखते हैं इसको. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इसको भी इंक्लूडेड. बट ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा था, नॉट इंक्लूडेड. बट ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज ये इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं कैलकुलेशन के समय जीडीपी के. ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो फर्स्ट इज द जीडीपी measures are aggregate production of final goods and services taking place within the domestic economy. Yes, it's a correct statement. Next one is it does not take into account of the aggregate production of final goods and services produced by the foreign national within the domestic territory. Is it true? No, it's not correct because it does take into the account, और यहाँ पे not बोल दिया. ओके so it does take into account the aggregate production of final goods and services produced by the foreign national within the domestic territory. Okay, so answer for this question is option number A. Only one statement is correct. Okay, next question is which of the following best defines the personal disposable income. PDI, personal dispositional income को कौन सा define किया है best. Okay, so first one is PDI is equal to personal income which is PI minus undistributed profit minus national non-tax payment. Incorrect. PDI is equal to personal PI minus personal tax payments plus undistributed profit is also incorrect. PDI, which is personal disposable income, is equal to personal income plus personal tax payment plus non-tax payment. It's also incorrect. Next one is PDI, which is personal disposable income, is equal to PI, which is personal income, personal tax, personal minus personal tax payment and non-tax payment. Okay, option number D is the correct answer for this question related to PDI. And if you're talking about the personal income, which is PI, it's basically income is a part of पर्सनल डिस्पोजेबल. अगर हम पर्सनल डिस्पोजेबल की बात करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट income which belongs to the household. They may decide to consume a part of it and save the rest. Okay, and PI is equal to PI की अगर हम बात करते हैं, PI is equal to NI minus undistributed profit minus net interest payment made by household minus corporate tax plus transfer payment to the household from the government and firms. Okay, let's come to the next question. Which of the following is added to the factor cost of product to get market price in the product? Okay, so answer for this question is क्या पूछा है, added to the factor cost of product to get market price of the product which is done by the total indirect taxes. Okay, next question is in the context of national income accounting, the national disposable income is equal to national income accounting के context में national disposable income किसके बराबर है, equal to. Okay, so first one is net national product at market price plus net other current transfer from the rest of the world. Is it true? देखते हैं. Next one is net national product at factor cost plus net other current transfer from the rest of the world. No, it's not correct. Next one is gross national product at market price plus net other current transfers from the rest of the world. No. GNP at factor cost
plus net other transfer from the rest of the world? No. So answer for this question is option number A, NNP at market price plus net other current transfer from the rest of the world. Okay. Next question is, in the context of national income accounting, which is NIA, gift prize scholarship received from the government are classified as, ये किस में आ जाएगा? सो ट्रांसफर पेमेंट में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल? इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल है? ओके. सो फर्स्ट वन इज बैंक बैलेंस, income, equity, shareholder, bank balance, income, all of the above. So answer is option number C, income is the flow variable. Okay. Next question is, consider the following statements. और यहाँ पे क्या पूछा है? Correct statement. Okay. So first statement is, an inflationary gap measures the difference between the current real GDP and the GDP of the economy operating at the full employment. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is, inflationary gap lead to the inflation which can be controlled by increase in government spending. Is it true? No, it's not correct, because with this it's a decrease, not increase. Okay. So inflationary gap lead to the inflation which can be controlled by the decrease in the government spending. Okay. So this statement is incorrect. So answer for this question is option number A, only one statement is correct. Okay. Next question is, the output of an Indian car company in the USA would be, क्या होगा? ओके. फॉर एग्जाम्पल यूएसए में एक कार बन रहा है. ठीक है. यूएसए में एक कार बन रहा है, तो उससे क्या होगा? इंडिया में उसका जीडीपी ग्रोथ होगा, जीएनपी होगा, क्या होगा? ओके. सो इसमें हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इंक्लूड यूएसएस जीडीपी प्रोडक्ट इंक्लूड इन यूएसएस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज जीडीपी बट इन इंडियाज जीएनपी. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यूएसए का जीडीपी में वो काउंट होगा बट इंडिया के जीडीपी में नहीं होगा. जीडीपी में वही काउंट होता है जो अपने कंट्री के अंदर में ही बना हुआ सब. ठीक है. बाउंड्री के जो है हमारा कंट्री, उसी के अंदर में ही जो अदर कंट्रीज में होता है प्रॉफिट, वो जीएनपी के अंदर आता है. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग are the stock variable? Okay. Stock variables, correct. First is national income, saving, wealth, capital. So national income and savings are not stock variable, it's a flow variable. Okay. फ्लो वेरिएबल, और फ्लो वेरिएबल में क्या होता है कि फ्लो वेरिएबल एक डिफरेंट टाइम के लिए होता है. ओके. फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 वीक के लिए. और उसके एग्जांपल्स और कौन कौन से हो जाएंगे फ्लो वेरिएबल्स के? लाइक एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, डेप्रिशिएशन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन मनी सप्लाई, आउटपुट, रेंट, प्रॉफिट, एट्सेट्रा. ओके. एंड यहाँ पे क्या पूछा है? बट यहाँ पे तो स्टॉक पूछा है, स्टॉक वेरिएबल. सो वेल्थ एंड कैपिटल बोथ आर स्टॉक वेरिएबल. ओके. और इसमें क्या होता है कि स्टॉक इज अ क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. फॉर एग्जाम्पल फॉरेन डेप्ट, लोन्स, इन्वेंट्रीज, नॉट चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड पॉपुलेशन एट्सेट्रा. Okay, so answer for this question is option number C. Statement 3 and 4 is the correct one. Okay. Next question is, consider the following statements, and there is asking about the not correct one. Okay, not correct statement पूछा है. So first one is, nominal GDP is calculated in a way such that the goods and services are evaluated at some constant set of price. Is it true? No, it's not correct, because it's not nominal GDP, it's a real GDP. Okay, real GDP is
calculated in a way such that the goods and services are evaluated at some constant set of price. Okay, so first statement is incorrect. Next one is an increase in nominal GDP does not necessarily mean that the production outputs has increased. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A is correct, because in this question there is asking about the not correct one, and the statement first is not correct. Okay, next question is consider the following statements related to, और इसमें क्या पूछा है, सब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अनलाइक द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स GDP deflator reflects the price of all domestically produced goods and services in the economy. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is unlike the consumer price index, which is CPI, the weights of goods used in calculating GDP deflator are constant. Is it true? No, it's not correct, because it's not constant. It's a different. Okay, different. Unlike the CPI, the weight of the goods used in calculating GDP deflator are different, not constant. Okay, so answer for this question is option number A. Only one statement is correct. Okay. Next question is consider the following statement, and there is asking about the correct statement one. So first statement is the basic price include production taxes but not product taxes. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is production taxes are and subsidies are paid or received in a relation to production and are independent of the volume of production. Okay, so yes, second statement is also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is the correct one. Okay, next question is in order to calculate personal income, which is PI, which of the following is required to be added in the national income? कौन सा required होता है national income में add करने के लिए? Okay, when calculating PI. So first statement is undistributed profit. Is it true? No. Transfer payment to the household from the government and firms. Yes, option number B is the correct answer for this question. Next question is with reference to per capita income, consider the following statement, and there is asking about the correct one related to per capita income. क्या पूछा है? So correct statement. Okay, so first one is it is typically calculated by dividing GDP, which is gross domestic product, by the total population. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is it often hides inequalities in distribution of income among different groups. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is the correct one. Okay, let's come to the next question, which is in the context of capital markets, consider the following statements. कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट वन पूछा. ओके, सो फर्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट्स प्रोवाइड डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द सेवर्स टू यूजर्स वाई द इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी. इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next one is in this market, capital funds comprising both equity and debt are issued and traded. Yes, statement second is also correct. Next statement is public participation is limited in capital market compared to the money market. Is it true? No, it's not correct, because it's not limited, it's quite extensive. Okay, quite extensive. So answer for this question is, because of there is asking about the correct statement, so answer will be option number A. Statement 1 and 2 only are correct. Okay, next question is consider the following statements regarding the insurance sector in India. Okay, insurance sector in India related to which statement is correct? So first is India's insurance penetration is less than 2% in GDP. Is it true? No, it's not correct, because
let me tell you why. Because in 2000 it is 2.7%. Okay, let me tell you here. In 2000 it is 2.7%, और वहाँ पे क्या बोला था, 2% से कम है, बट ऐसा नहीं है. 2000 में ही 2.7 था, और ये अभी इंक्रीज़ होके इन 2024 में हो गया है 4.2%. ओके, 4.2% ऑफ द GDP. Okay, so first statement is incorrect. Next one is the FDI limit in the insurance sector is at 49% through the automatic route. Is it true? No. FDI इसको लिमिट नहीं किया है, इसको और इंक्रीज़ किया है. 49 टू कितना कर दिया है, 74%. ओके, कब किया था, तो बजट 2021 जब लाया गया था उससे, उस टाइम, कब, बजट के टाइम. ओके, सो ये हो गया. एंड अभी की अगर हम बात करते हैं नाउ के, तो गवर्नमेंट अभी इसको प्लान कर रहा है टू increase this limit to 74 to 100%. Okay, so answer for this question is option number B. Both statement is not correct, क्योंकि यहाँ पे पूछा है not correct. Okay, सो ये हमेशा एग्ज़ाम में देखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप ध्यान नहीं दिए. नॉट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे रहता है तो फिर भी एक बार दिख जाता है, या फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सामने में, बट साइड में रहता है तो कभी कभी आप ध्यान नहीं देते हैं. ओके, जल्दी में या हड़बड़ी में, क्योंकि एग्ज़ाम में एक अलग सा टेंशन रहता है. तो उस टाइम आपको क्या करना है, काम रह के हमेशा जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो ये पहले देखना है कि वहाँ करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है. ओके, क्योंकि इसी में गलत होता है. फॉर एग्जांपल अभी ये दोनों स्टेटमेंट हमारा ये गलत था, नॉट करेक्ट था. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत था, स्टेटमेंट 1 और 2. और यहाँ पे क्या पूछा था, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं पूछता तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं. ओके, ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं तो मेरा क्या हो जाता, क्वेश्चन जो हमें पता था कि उसका आंसर दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो अगर हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे नॉट पूछा है कि नहीं, तो क्या करते हैं, हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करते हैं. तो क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? नो, इट्स नॉट, बिकॉज देयर इज आस्किंग अबाउट द not correct one. Okay, so answer should be option number C, which is both statement 1 and 2 are not correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements about the micro, small and medium enterprises, which is MSME, and there is asking about the correct one. So first statement is MSME are classified on the basis of annual turnover only. Is it true? No, ये सिर्फ एनुअल टर्नओवर पे क्लासीफाई नहीं होता है. देर इज़ अ डिफरेंट वे ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज it generate more employment opportunity per unit of capital investment compared to large industries. Is it true? Yes, it's a correct statement. And if we're talking about the MSME sector in India are classified based on their investment in plant and machineries or equipment along with their annual turnover. Okay, सिर्फ प्लानिंग में उसका टर्नओवर भी देखा जाता है. ओके, सो अगर हम इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, so answer for this question is option number A, only one statement is correct. Okay, sorry, not A, it's हो जाएगा option number B, only 2 statement is correct. और अगर हम इसकी बात करते हैं MSME के बारे में, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस में, इन माइक्रो इंटरप्राइजेस, माइक्रो में क्या होता है कि इसमें इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है नॉट मोर देन 1 करोड़. 1 करोड़ से ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए. एंड अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं, टर्नओवर के नॉट मोर देन दी 5 करोड़. ओके, एंड स्मॉल की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस की, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है. एंड टर्नओवर की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा मैक्सिमम, नॉट मोर देन 50 करोड़. ओके, एंड अगर हम स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं,
50 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं तो टर्नओवर में नॉट मोर दैन दी 250 करोड़। ओके, सी ए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड एमएसएमई इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द लेस कैपिटल इंटेंसिव एंड मोर लेबर इंटेंसिव। ओके, ये कैपिटल इंटेंसिव कम है और क्या है, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे क्या पूछा है, सो फर्स्ट वन इज inflation indexed bonds are eligible to be kept as a part of statutory liquidity ratio. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is inflation indexed bonds are treated as government securities, which is GSECs. Is correct? Yes, it's also correct statement. So answer for this question is, यहाँ पे correct statement पूछा है. So option A is the correct one because both statement 1 and 2 are correct and statement second is correct explanation of statement 1. ओके, जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन आना है तो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बिकॉज लगा के आप उसको ये कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज। ओके, फॉर एग्जांपल inflation index bonds are eligible to be kept as a statutory liquidity ratio because inflation index bonds are treated as a government securities. Okay. So answer for this question is option number A. Next question is with reference to PM Street Vendor, which is Atmanirbhar Nidhi, which is PM Swanidhi. Okay, so PM Swanidhi scheme के regarding कौन सा statement correct है वो पूछा गया. Okay, so first statement is it is a central sector scheme to facilitate street vendor access to collateral free capital loan. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is it facilitates an initial working capital loan of up to 1 lakh at a subsidized rate of interest. Is it true? No, it's not correct because उसमें free working capital loan दिया जाता है up to 10,000. ओके, 1 year tenure में, और वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है एंड इसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर ये जो लोन आपको मिल रहा है वो अगर टाइम पे आप उसको रिफंड कर देते हैं गवर्नमेंट को तो उसमें आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा 7% पर एनम ऑन रेगुलर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड कैश अप टू 1200 per annum on undertaking prescribed digital transaction and another ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लोन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू hybrid annuity model, which is HA model for public private partnership in highway construction. Okay, so first statement is because there यहाँ पे correct statement पूछा है, so first statement is as per the model the government will contribute exactly 50% of the product cost in the first 5 years through the annual payment annuity. Is it true? No, it's not correct because it's not 50%, it's 40%. Okay, so first statement is incorrect. Next one is under HAM, which is a hybrid annuity model, a road developer constructs the road but he is not allowed to recover his or investment through toll collection. Yes, option number C statement second is correct. Okay, so answer for this question is option number B is correct. Okay, only 2 statement is correct. Next question is with reference to participatory note and there is asking about the correct one. Participatory note, consider the following statements and there is asking about the correct statement. So first statement is it is a derivative instrument
issued by the SEBI registered foreign institutional investors in foreign jurisdiction. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the inventor in participating notes owns the underlying Indian security. Is it true? No, it's not correct because it does not underline in the Indian security. Okay, so second statement is incorrect. Next one is participating notes are freely tradable and can be easily transferred from one investor to another. Yes, it's a correct. So answer for this question is option number C. Option number C, statement 1 and 3 are correct and statement second is incorrect. So answer will be option number C. Okay. Next question is consider the following statements regarding the micro insurance in India. माइक्रो इंश्योरेंस इन इंडिया रिलेटेड विच स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट एम्स टू प्रमोट इंश्योरेंस coverage among economically vulnerable section of the society. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is there is no regulatory body to regulate the micro insurance in India. Is it true? No, it's not correct because इसका regulatory body कौन है? IRDA, which is Insurance Regulatory Development Authority of India. Okay, so answer for this question is option number B is correct because there is asking about the incorrect one. Okay. Next question is consider the following statements regarding the aviation sector in India. एविएशन सेक्टर इन इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा है. सो फर्स्ट वन इज रीजनल कनेक्टिविटी विच इज स्कीम उड़े देश का आम नागरिक इज एप्लीकेबल. उड़े देश का आम नागरिक विच मीन्स उड़ान इज एप्लीकेबल ऑन फ्लाइट्स विच कवर डिस्टेंस मोर देन 1000 किलोमीटर. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज ये मोर देन 1000 पे सिर्फ एप्लीकेबल नहीं होता है, ये 200 to 800 किलोमीटर पे एप्लीकेबल है. बट यहीं पे अगर हम बात करते हैं हिली रीजन्स की, हिली रीजन्स हो गया या फिर रिमोट एरिया, आइलैंड्स एंड सिक्योरिटी सेंसिटिव रीजन्स, उसमें ये लिमिट इम्प्लीमेंट नहीं होता है. ओके, 200 to 800 वाला. So first statement is incorrect. Next one is Director General of Civil Aviation, which is DGCA, is the regulatory body in the field of civil aviation. Is it true? Yes, it's a correct statement. और यहाँ पे क्या पूछा था? Correct one. So answer for this question is option number B. Only 2 statement is correct. Okay. And अगर इससे related कुछ important facts की अगर हम बात करते हैं, for example, India is the third largest domestic market of civil aviation in the world. Okay. और ये कितना 5% ऑफ द GDP है एंड कंट्रीब्यूट करता है GDP में कितना 5%. ओके. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं इसमें जॉब्स कितने प्रोवाइड किया तो 4 मिलियन जॉब्स. ओके. सो आंसर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट वन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फ्यूचर इज डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल contrast that put an obligation on the parties to buy or sell an asset at a predetermined future date and price. Okay. Next one is options are correct one. Options are financial derivatives that give the right but not the obligation to buy or sell the underlying assets at an agreed upon prices and rates. It's also correct sir. Related और ये क्या हो जाएगा? Warrants. Answer for this question is option number C. Both statements are related to warrants. Okay. Next question is in the context of the capital market in India, which statement best describe the term right issues? Okay. Right issues को कौन सा best describe किया है? So first one is an issue of shares to existing equity shareholders in proportion to their existing shareholders. Is it true?
यस, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिलेटेड टू राइट इशूज एंड इशूज द शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. ओके, so let's come to the next question, which is exchange traded currency derivatives. Exchange traded currency derivatives are regulated by which of the following institution. किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? सेबी ओनली, आरबीआई ओनली, सेबी एंड आरबीआई बोथ, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. So answer for this question is option number C, both. सेबी एंड आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है एक्सचेंज ट्रेड करेंसी डेरिवेटिव्स को. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर इज responsible for the indication of champion services sector. Okay, champion services के सेक्टर में which union minister is responsible for the identification of champion services sector? So Ministry of Commerce and Industry. Yes, option number A is the correct answer for this question. Let's come to the next question. और नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने स्टार्ट किया है करंट अफेयर का सीरीज़, जो कि डेली 10 क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में. ओके, आप उसको देख सकते हैं. एंड अगर उसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा. जो 10 क्वेश्चन जो डेली कराया जाता है, ओके, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा हमारा, जो कि है रत्नात्राया क्लासेस के नेम से. ओके, एंड इसका भी करंट अफेयर का भी जो वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा. आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, एंड करंट अफेयर भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन डेली 10 करना है तो. ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ consider the following statements about the मसाला बॉन्ड. ओके, मसाला बॉन्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा. ओके, सो फर्स्ट वन इज मसाला बॉन्ड्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कैन बी इशूड इन द इंडियन एज वेल एज ऑफशोर कैपिटल मार्केट. इज इट ट्रू? Related to the masala bond? No, it's not correct, because in India ये रूपी में होगा. ओके, और दूसरा में नहीं होगा एज वेल, ऑफशोर ऑफ द कैपिटल मार्केट. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इन मसाला बॉन्ड्स द करेंसी रिस्क लाइज विथ द इशू नॉट द इन्वेस्टर. इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज अगर हम मसाला बॉन्ड की बात करते हैं, इन द मसाला बॉन्ड्स द करेंसी रिस्क लाइज विद द इन्वेंटर. ओके, करेंसी रिस्क जो है वो इन्वेंटर पे लाइज करता है, एंड नॉट इन द इशूअर. इशू जो करता है उस पर लाइज नहीं करता है. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड अगर हम मसाला बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, बेसिकली मसाला बॉन्ड है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया को अदर कंट्री से लोन लेना है या कुछ इक्विटी चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल लोन लेना है. ओके, तो मानते हैं कि यूएस से लेना है. ओके, तो उसमें क्या होगा, अगर इंडिया डॉलर में लेगा उससे पेमेंट, फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की बात करते हैं. ओके, 10 करोड़ की, तो 10 करोड़ डॉलर लेगा उस टाइम यूएसए से. तो अभी डॉलर का ये क्या है, डॉलर 90 रुपीज़ फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और सॉरी इंडिया का रुपये के अकॉर्डिंग डॉलर कितना है, $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 रुपीज़ इन इंडिया. ओके, तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लेते हैं डॉलर के फॉर्म में, तो बाद में फॉर एग्जांपल अगर ये 90 रुपीज़ है, बाद में बढ़ के 100 हो गया, या फिर 200 हो गया, या फिर कितना भी 95 ही हो गया, फॉर एग्जांपल 95 ही हो गया, तो इसमें क्या होगा कि हमको इतना उससे इंडियन रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करके 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमको पेमेंट करना पड़ेगा. ओके, इसीलिए हम मसाला बॉन्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें कि इंडियन रुपी में हम लोन लेते हैं, जिससे कि फॉर एग्जांपल अभी 10 करोड़ ली हैं, तो बाद में भी मुझे 10 करोड़ ही रिटर्न करना पड़ेगा, चाहे डॉलर का प्राइस कम हो या ज़्यादा हो. ओके,
सो ये है बेसिकली मसाला बॉन्ड का काम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to treasury bill which is a T bill, consider the following statement. और यहाँ पे correct statement पूछा है related to T bill which is treasury bill. So first statement is they are long term capital market instrument. Is it true? No, it's not correct because ये long term नहीं है, ये short term है. Okay, so first statement is incorrect. Next one, T-bill are considered as the asset of the government. Is it true? It's also incorrect because it's a liability. Okay, not asset. So second statement is also incorrect. Next one, foreign portfolio investment is allowed in treasury bill. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A. Only one statement is correct. Okay, क्योंकि यहाँ पे correct statement पूछा गया था. Next question is consider the following statements about the engineering, procurement and construction. Okay, engineering, procurement and construction, which is EPC model, and there is asking about the correct statement. So first statement is in this model the cost is completely borne by the government. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the private sector's participation is minimal and is limited to the provision of engineering expertise. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 are correct. Okay, next question is with reference to the Indian economy certificate of deposit and commercial papers are the instrument of. ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? कौन सा? इंडियन इकोनॉमी में जो विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ. ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ओके, मनी मार्केट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the National Skill Development Corporation, which is NSDC. रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया. ओके, NSDC के अकॉर्डिंग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रिलेटेड. फर्स्ट स्टेटमेंट इज it is a not for profit public limited company set up as a part of the National Skill Development Mission. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the Ministry of Commerce and Industry is a nodal agency. Is it true? No, it's not correct because if we're talking about the ministry one, so Ministry of Skill and Development Entrepreneurship वो काम करेगा. Ministry of Skill and Development Entrepreneurship hold 49% of the capital of NSDC. Okay, 49% of capital of NSDC are held by this one. Okay, so answer for this question is option number A. Only one statement is correct. Okay, let's come to the next one. Consider the following statements regarding the telecom sector in India. Okay, टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया. ओके, सो फर्स्ट वन इज द 5G नेटवर्क हैज़ बीन रोल्ड आउट ओनली इन सम स्टेट ऑफ इंडिया. इज इट ट्रू? नो. क्या आपको ऐसा लगता है कि 5G नेटवर्क कुछ ही स्टेट्स में है इंडिया के? नो, ऐसा नहीं है. वो ऑल 28 स्टेट्स में है. ओके, एंड यूटी जो है 8 हमारा वो भी सारे में है. ओके, सो आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज एनी काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज completely prohibited in the telecom sector. Is it true? No, it's not completely prohibited क्योंकि इसको अलाउ किया गया है 100% के लिए. ओके, इट्स अलाउड बाय द 100%. So second statement is also incorrect.
So answer for this question is option number D. Neither 1 nor 2 is the correct answer for this question. And अगर हम इसमें कुछ important facts भी अगर हम जान लेते हैं related to India's in the टेलीकॉम सेक्टर, फर्स्ट वन इज़ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट telecommunication service telecommunication market with the subscriber of, इसमें कितने सब्सक्राइबर, 1.16 बिलियन. ओके, सो सेकेंड लार्जेस्ट है. तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि टॉप में कौन है, फर्स्ट में कौन है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी था. सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन में रहेगा. थैंक यू सो मच.